Okay, so dear students, we were basically discussing how to determine these partial molar properties. We discussed in the last class, we discussed two methods, you know, determination of partial molar properties. Two methods we have already discussed. The last method today we will discuss is उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल या आप कह सकते हो मैथमेटिकल मेथड यूजिंग ए सिंपल इक्वेशन मैथमेटिकल मेथड. ओके, सो जो ये एनालिटिकल मेथड बेसिकली है, इसमें सिंपल एक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं जो वॉल्यूम की विद रेस्पेक्ट टू एम. ठीक है, so I will write the first point. The mathematical or this analytical method involves the expression of जो हमने कल कहा था that total volume V है ना, total volume V as a function of molality है ना, function of molality या small m. तो सपोज जो V है टोटल वॉल्यूम, इसको हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं, इज एक्सप्रेस्ड एज सिंपल सी एक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप बनाते हैं. V इज इक्वल टू, सपोज दिस टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू A प्लस B इंटू M इज योर मोलैलिटी, प्लस C इंटू M स्क्वायर है ना. ये वाली इक्वेशन हम इस तरीके से लिख रहे हैं. ठीक है, किस केस में, जब हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड. तो व्हाट आर दिस A B C? तो दीज आर सिंपली कॉन्स्टेंट्स है ना, वेयर A B and C are constants, but at a given temperature. At a given temperature and pressure. Temperature and pressure. तो अब हम क्या करेंगे, सपोज इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर सपोज 3 नाम देता हूं. Why? Because 1 and 2 we have already done in the two methods है ना. तो as for that उसको मैं इक्वेशन 3 या 1 भी लिख सकते हो, वट एवर. सो इसी इक्वेशन को मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू मोलैलिटी. ठीक है ना. तो व्हाट वी विल डू, सो वी विल सिंपली differentiate now. Differentiating equation 3 with respect to molarity, with respect to small m और molality. So जब हम इसको with respect to बेसिकली मोलैलिटी हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलता है V2M बेसिकली. ठीक है ना, with respect to M, which basically yields the value of partial molar volume of second component, या सिंपली जो सॉल्यूट हमने लिया है. ठीक है ना.
तो इसको हम सिंपली फिर डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं. I will write this equation one more time. Here v is equal to, हमने इसको ऐसे बनाया, v plus bm plus cm स्क्वायर, है ना. a b c ये हमारे पास सारे कॉन्स्टेंट्स. ठीक. अब इसको सिंपली डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू दिस मोलैलिटी. ठीक है ना. तो जैसे हम इसको विद रेस्पेक्ट टू मोलैलिटी करते हैं, तो ये जो वैल्यू होता है, दिस वैल्यू, दिस इज बेसिकली इक्वल टू फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट 0 हो जाएगा. तो विद रेस्पेक्ट टू दिस इट विल बी सिंपली that means it will be equal to simply b. With respect to this one, c is constant, ये बाहर आ जाएगा. It will be x raised power n, है ना, differentiation of x raised power n and x raised power n minus 1. So it will be simply equal to 2cm, है ना. तो ये जो बेसिकली वैल्यू है, इसी को ये हमें बेसिकली जो डो वी अपॉन डो एम ये वैल्यू देता है, दैट इज पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस सेकंड कंपोनेंट या सॉल्यूट. ठीक है. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. सिंपली विद रेस्पेक्ट टू मोलैरिटी आपने डिफरेंशिएट कर. What we will do now, कि जो हमने ऑलरेडी कल एक इक्वेशन निकाली थी, तो दैट जो टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना. सो what we will do, we will substitute the value of v, है ना, and v2m फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, है ना. यहां से हमने v2m भी निकाल लिया और इक्वेशन 3 से हमारे पास v है. ठीक है ना. एंड इक्वेशन 4 टू इक्वेशन, सपोज जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था फर्स्ट मेथड में या सेकंड मेथड में भी, तो आई विल राइट दैट इक्वेशन 1 वंस अगेन, कि हमने जो टोटल वॉल्यूम वो बेसिकली इक्वल टू आया था हमारे पास n1 v1m प्लस number of moles of this second component or solute and v2m partial molar volume of that solute. ठीक है. तो this was basically our equation number 1, जो हमने मेथड नंबर 1 में डिस्कस किया था. ओके. तो जब हम ये सारे वैल्यूज v2m इक्वेशन 4 से और v कहां से, इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट करेंगे, तो v को हम सिंपली रिप्लेस किससे करेंगे, वी विल रिप्लेस v विथ a प्लस bm प्लस cm स्क्वायर, है ना. सो वी विल गेट simply we will replace this v first with equation 3rd, that is a plus bm plus cm square. ये हमने ऑलरेडी लिखा है, is equal to this n1, it will be same, ये हम ऐसे लिखेंगे n1 and partial molar volume of solvent or component 1. ठीक है ना. एंड v2m हमने निकाल लिया है ना. तो v2m को हम सिंपली किससे रिप्लेस कर सकते हैं, v2m को हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं b प्लस ट्वाइस mc स्क्वायर. ठीक है. ओके. सो वी विल राइट हियर प्लस n2 हियर, मैं n2 ऐसे लिख रहा हूं, इन प्लेस ऑफ v2 आई विल राइट b प्लस ट्वाइस c इंटू m, है ना. ऐसे कर सकता हूं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस. और व्हाट यू हैव टू डू कि अब आप
सिंपली लिख सकते हैं दिस इक्वेशन को मोर in this form, or what we can do, we can replace this n2, है ना। यहाँ पे आप पॉइंट एक और लिखिए, जो n2 है दैट इज नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि ये इक्वल टू है सपोज मोलैलिटी, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोलर्स ये हम ले रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स we will replace this n2 with this molarity. So now our equation becomes a plus bm plus cm square is equal to simply first term n1 v1m plus n2 को replace करेंगे m से, है ना। So we will replace it with m and inside we will get b plus twice c into m. The next step, what we will do, we will multiply this m to here and here, ठीक है। So we will get this equation now, जो final equation हमारे पास आ जाएगी, that is a plus bm plus cm square will be now equal to n1 v1m plus it will be simply equal to now bm, है ना, plus c into m square. So it will be simply equal to bm plus twice c into m square. So if you carefully look at this equation, I think we can cancel some terms here. bm and bm will go. So what we have simply a. I will do one thing. I will take this twice cm square this side, or we can say 1 and 1 will cancel. Okay, write this in this form. Here it is cm square, it is twice cm square. It will be minus because 1 will cancel, so ये simply हमारे पास आ जाएगा minus, because this will be minus 2 cm square plus cm square, that will be equal to simply cm square minus cm square, है ना, cm square. तो ये मैंने इस साइड में लिखा and here I got only this value n1 v1m. okay, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें what we have assumed, we assume the number of moles of solute defined by the molality of solution. ये हमने assumption इसमें लिया है, ठीक है ना। तो जो हमने n2 is equal to m लिया है, molality of solution, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है and you will get this equation. That means यही n2 हमने simply किसके इक्वल लिखा था, molality of solution के इक्वल. Now you can rearrange this equation, है ना. This is equation number, suppose this is okay, this is fifth equation number 5. We can rearranging equation 5, arranging equation 5. So you will get simply this v1m value, है ना. इसको simply आप v1m और थ्रू आउट डिवाइड कीजिए n1 से, एंड यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ रह जाएगा, एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, दैट मीन्स a माइनस c m स्क्वायर अपॉन n1. So that means जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ
सॉल्वेंट या कंपोनेंट 1 वो आप सिंपली निकाल सकते हो। आपको ये कांस्टेंट मिल जाएगा बाय प्लॉटिंग ए सिंपल, या जो वैल्यू निकलेगा ए सी और मोलैलिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वन, ठीक है ना। So these were the three methods, basic methods, how you can calculate these partial molar volumes या partial molar properties of a solution. Okay.